नमस्कार। नारी तू नारायणी के इस खास कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इंस्पायरिंग इंडियन वुमन की तरफ से मैं मधु चौरसिया आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये दुर्गा पूजा का वक्त चल रहा है और हम सब उसी मोड में चले जाते हैं, अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। इंडिया में तो हम सब दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यूके में भी हम उसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ेंगे जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊँगी इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ सबसे पहले हैं इशिता। इशिता, आप का बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सबसे पहले अपने बारे में बताएँ। Hi Madhu, I am Ishita. आपको आपको नाम you have already introduced me. So yeah, I am a telecom profession और मैं लंदन में it's been like more than 10 plus, yeah, more than 10 years now. So yeah, I'm very excited about, I'm a Bengali. I'm originally from Bengal, but I was born and brought up in Delhi. So, but Durga Puja is very close to my heart. So, it's a lot of planning that we do here, and some of the I think it's like it's one of the most anticipated event for us as Bengali. Yeah, so I'm very excited. This is the second day, so I'm all dressed up in my red and white. As you can see, I'm wearing a red and white sari. तो बस like we attend all the cultural programs. Yeah, it's a lot of fun. तो आप कहाँ सेलिब्रेट करती हैं? दुर्गा पूजा कहाँ और कैसे सेलिब्रेट करती हैं यूके में? So right now I'm in Harrow, Zoroastrian Center में. Last year also I was associated with this group. तो और बहुत सारी जगह भी like there are other places where Durga Puja is celebrated, like we have Ealing, we have RBBA in Slough. So we make sure that we attend once, to all these venues. Like Kolkata mein, it's very popular that people do this pandal hopping. So we try to do the same thing over here. Like we don't get that much time because obviously we have to wait for weekends, but if it is a working day, we make sure that we make we best utilize the evenings. So बहुत सारे जगह पे है, but right now I'm in Harrow. It's one of the good ones, I feel. आपने कोलकाता की याद दिलाई, क्योंकि दुर्गा पूजा वहाँ पे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ बड़े-बड़े पंडाल बनाए जाते हैं और बहुत बहुत हम्म, ही मुझे याद है, मैं बचपन में जब थी तो वहाँ पर मैंने सेलिब्रेट किया था। कोलकाता की दुर्गा पूजा हम्म, मैंने देखी है। तो आप वहाँ की हम्म. कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत मिस करती हैं यहाँ यूके में? My family for sure. I have my mom, my sisters, everyone there. So हम लोग तो यहाँ पे like we are away from our family and then we make plans. So वो miss तो करते हैं, but we आपकी try to आवाज़ like हम तक नहीं पहुँच पा can रही you है, not hear इशिता। me? Oh, यस, okay. नाउ आई कैन हियर यू। Is it better? Yeah. जी। So, family ko miss karte hai for sure. It's different when you're living in a different country. But we try and make, like hum log recreate karna. We try and recreate the whole thing that we have experienced as a kid, or whatever we have experienced in a childhood. So, family ko miss karte hai. But again, we have our friends here. So, and because it's been a long time that we are in this country, we don't really miss that much because we have been successful in a way to have that sense of community. तो कुछ उतना मिस नहीं करते. ऑफ कोर्स चाइल्डहुड मिस करते. वी आर दोस मेमोरीज आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. सो या. क्योंकि यहाँ पर जब ये यहाँ का वेदर बहुत सूट नहीं करता और हम नेचुरली है कि हम पंडाल इन साइड बनाते हैं जहाँ पर भी होता है, तो कैसी भीड़, लोगों की कैसी भीड़ देखने को मिलती है? भीड़ शहरों लाइक में इट आप किस डिपेंड्स ऑन तरीके? द. भीड़ लाइक जी। बिकॉज हम लोग वी इन्फॉर्म आवर फ्रेंड्स दैट we'll be here on this day. तो accordingly groups सा बन जाता है. So people come in groups. They try to on evening के तरफ we have all these cultural events. We try to promote Bengal culture and heritage. तो वो सब attend करने के लिए लोग आते हैं. They attend, like we actually have flyers. We advertise that okay, we have this fashion show. Like this evening we have fashion show here. So people come to attend not only the puja but also these cultural events. So it's a good place to meet with new people or new people that are in the have a sense of community really. जी, And जी, वो मिल जाता है यहाँ पे. And we try and make sure that we have that is very important, I feel. जी। जी, हम सब यहाँ पे देखा जाए तो वर्किंग होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी पूजा है वो वीकेंड में मनाएँ, पर ये क्योंकि 10 दिन की पूजा होती है, इंडिया में तो छुट्टी होती है और बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट कर पाते हैं। क्या ये लगता है आपको कि Yeah. ही अगर हम कुछ सेलिब्रेट करना है तो वीकेंड का प्लान करते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह बच्चे को उठाना और जल्दी स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, like we usually utilize the weekend.
तो अगर पूजा, like we don't do it on weekdays, we try and avoid to do it. Those, there are some pujas, people who have the manpower, they do it over the, like, during the week days as well, but we try to avoid it as much as we can. Chuttiyan miss karte ho, so going back to your previous question, we definitely miss the holidays, we don't get holidays, but wo sab aise plan karte hain so that people are able to go join back to work, and even you, and some last time, like I remember I took a couple of days off just to celebrate this, because you get it only once in a year, right? So you have to make sure that you don't feel stressed out, work ek taraf, but also you want to need, you have to find time for all the socializing, all the social events. So that is what, and also I feel it's very important for the next generation, they have to know this is what mummy celebrated when she was a kid, so that we try to make him understand that this is an important event for us, so we do, this is what we do, and this is how we celebrate. So yeah. जी, जैसे बच्चों की बात की आपने, हम जब छोटे थे और हमारे पेरेंट्स हमें लेकर जाते थे वहाँ पे पंडालों में, तो नेचुरली हम यहाँ पर वो चीज़ें मिस करते हैं। क्या आपके बच्चे इस चीज़ को वैसे ही एन्जॉय करते हैं या उसमें आपको कुछ कमी नज़र आती है यहाँ? एंजॉय तो करते नहीं है, बट वी ट्राई एंड सी दैट दे एंजॉय, like food stall hote, that is one thing they find very tempting, so we try to encourage, like we try to do our best, but I feel that they cannot have the same feelings like we had, because they're not really used to those traditions, though hum log try karte hain, but yeah, they don't, but then if they find their friends there, like if we have other, if they have their friends, then they have something to look forward to, that they can play with their friends. But yeah, with time probably they'll try and appreciate, or they will eventually understand why mommy likes some certain things and why not, what is tradition, अच्छा। and yeah, all that. शायद आप ये कहना चाहती हैं कि अगर हम धीरे-धीरे कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो पल रहे हैं, यहाँ की परवरिश में बच्चे शायद हमारे कल्चर से वो फिर से कनेक्ट हो पाएँगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को हम जिस तरीके से हमने अपना बचपन गुज़ारा है, हम उसी तरीके से Uh-huh. अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, वैसे ही इस त्योहार को एन्जॉय करें। आपको लगता है कि कोलकाता में बहुत बड़े-बड़े पंडाल बनते थे, बहुत भीड़ होती थी, वहाँ पे चटपटी चीज़ें खाने को मिलती थी, क्या वो चीज़ आपको यहाँ पर कमी लगती है? लगती तो है, the reason is that used to be like at a grand scale, right? Everything is so big and people spend, मतलब वहां पे जो देखने को मिलता है, also the the craftsmanship, जो पंडाल बनाने में the effort and all that, we don't have the time on, that is something definitely that is not here, वो तो मिस करते ही है, and the food, street food, I mean I love Indian street food, वो मिस करते हैं, पर यहाँ पे छोटे स्केल में जो होता है, we have to be happy with that, we can't complain that miss karte hain, what's the point when we know that we have to देखती live हूँ here वहाँ पर and भी छोटे-छोटे पंडाल होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हाँ, हैं और बहुत बच्चे एन्जॉय करते हैं वहाँ पर भी। तो क्या आपके हम्म, बच्चों को भी इंतज़ार रहता है कि हम वैसे ही क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे वो उस तरीके से वेस्टर्न ड्रेसअप में होते हैं, क्या वो एन्जॉय करते हैं वहाँ के अगर आप बंगाली उनको पहनाना चाहते हैं, तो क्या वो उस चीज़ को लाइक करते हैं नहीं, बच्चे? they don't, but I give them no choice. But then you have to जी, make sure जी। that it's comfortable, they have to know, like my son knows that I'm going to wear a sari, I'm going to dress up and all that, so he knows that this is what I should expect, and one day in a year it's not that bad if you have to wear Indian attire. So yeah, by now he knows, he's just 6 year old, but he knows that this is what I'm expected to do, wear something Indian on the day. जी, जी। जी, लेकिन स्कूल में भी मैंने देखा है कि बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में Mhm. बताया जाता है। अगर हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट Yeah. करते हैं तो बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि आप अपने फेस्टिवल के बारे में बात करो, बताओ, दूसरे बच्चों को भी बताओ। क्या वो इंटरेस्ट है Mhm. बच्चों में, यहाँ के बच्चों में बताने में? Yeah, I mean, my son, Durga Puja, obviously, because it's from, like, it's mainly like celebrated by the Bengalis, though it is kind of, these days it's done like, from all over India, they know what is being, they want to dress up like, in the Bengali drape sari and all sorts. But yeah, my son knows about Diwali because they talk about Diwali. So that is one thing good, that in this country he gets an exposure of everything. He knows what is Christmas, what is Diwali, because he's a Bengali. I am a Bengali. He knows what is Durga Puja. So I feel he has that exposure. जी, तो आप ये जो 9 दिन होता है कैसे सेलिब्रेट करते Mhm. हैं? कब से शुरू होती है पूजा और कैसे होती है यहाँ पे? क्या-क्या चुनौतियाँ होती हैं यहाँ पूजा करने में? आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएँ। So 9 दिन तो नवरात्रि का हो गया. For Durga Puja, it's just the 5 days. It's a very important, like the last 5 days are what we call Durga Puja. We have Shoshti, we have like starting from 6 days, 6, 7, 8, and on the 10th day, which is like we call it Doshami,
That is the day we do Shidur Khala, which is very popular. And you must have seen in Bollywood movies, like people, like the ladies wear red and they play with sindoor, and they. So that is very grand. The planning that we do it, we actually like start early. We try and start early. We plan for the cultural events. We plan for the puja, because the different rituals you have to follow. For Ashtami, the eighth day, you have all sorts of pujo, Ashtami pujo, and all that. We have from the on the seventh day we do the kolabo snan. So we have to make preparation. Sometimes we get some other stuff from India, because and also there are local shops like in Wembley where you can order and get all this. We offer 108 lotus. So that is also ritual. Like some we tend to do. We last year we had got them from, like we had ordered from Wembley. We made sure that it's there on the day to offer to Goddess Durga. So those are the planning you have to. There's a lot of planning, and because we have different teams. Like I was a part of this last year as well. This Harrow Puja, and we had a cultural team. We have a pujo team who are only talking about the different things that you need to do, what is the sequence and all sorts. So that is done early, like early on, so that. And also we delegate the work, because it's not possible for one person to do everything. One person is in charge, who is leading the pujo, and then you have different sub teams who is taking care of decoration. Then you have that, like I said, that pujo, the schedule and everything, then cultural activities. And also there, because we do the bhog as well, that is the, you get free dinner, lunch every single day. So that everything has to be planned in advance. So that is why what we do. And also the, how, dress code, how you, what color you should wear on a certain day, we try to discuss all that. So it's a lot of fun. The discussion phase is more kind of exciting, because you're preparing yourself, and then it 3 days it finishes in, I mean, it's over in no time. So the planning bit is more interesting, I feel. Yeah, and keeps us busy. जो जिस तरीके से आप वहाँ पर हैरो में मनाती हैं, वहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है? किस तरीके से लोग वहाँ पर जुड़ते हैं? और कैसे आप इस चीज़ को हर साल ऑर्गेनाइज़ करती हैं? So it's just friends, like, a group banta hai, and then you call your friends who want to be associated with the puja, who want to be part of the puja. So if they show interest, we said, okay, you're more than welcome, because it's all about community. Yeah, it's all about bringing people together, and we like to हुँ, work हुँ। together. It's a nice place to have that sense of community and meet new people. So we encourage more and more people to come and join us, because it's a big puja. 3 day affair is not a joke. So it's good to have more people showing interest. So we try to do that. We try to encourage people to come and join us and help us with the puja preparations. जैसे पूजा में आपने प्रसाद की बात की, भोग की बात की, तो उसमें क्या-क्या बनाया जाता है Mhm. और कैसे उसका प्रिपरेशन किया जाता है? Oh, Bhog, you have different items really. First day, जैसे कल बना था, we had fried rice, we had chutney, dates and cashew nut chutney, we had aloo ki sabzi, different items really. We have sweets, we have papadums. So yeah, and the menu is different. So so for some people, menu is attraction. So what, like, let's say for, like, my husband, he decides where to go based on the menu. So that's also, it's a big part. So you have to make sure that. And also you offer you so for us, the bhog that we offer to Goddess Durga, that is cooked by us, one of us. We don't usually get it done, like get it from the caterers. So we say that, okay, we'll do this. No, but like one of the days, Ashtami is the main day. So that is, some people can say, okay, some of us cooks it at home and brings all the food stuff, all the bhog to the venue to offer to Goddess. So that is one thing. And then the other bit is where we do mass catering, like for the people who are attending, for the attendees. So yeah, so we have different teams doing different things. ये तो हो गई भोग की बात। अब मैं जानना Huh. चाहूँगी जैसे दुर्गा जी को आप हर साल यहाँ पर विसर्जित Mhm. नहीं कर सकते। आप दुर्गा जी को Mhm. कहीं न कहीं वैसी जगह रखते हैं बहुत सँभाल कर, तो Mhm. वो कैसे होता है? Mhm. उसको किस तरीके से रखा जाता है ताकि फिर नेक्स्ट ईयर हम वही रूप देख पाते हैं दुर्गा जी को? Yeah, it's a lot of work. So we have a team who is dedicated. Like हम लोग एक venue है, we know somebody who is we wrap it up nicely so that it's protected. और एक साल के लिए वहाँ पे like एक shed में रख देते हैं, like a nice place we have for this big size idol. It's not really that big compared to other pujas like Camden, but it's a good size murti. So we wrap it up, we make sure that it's kept safely. और वहीं पे रखते हैं, we don't even touch it. So it's kept in storage for 1 year, and then we take it out for next year, get it ready, get it clean to as if, yeah, that's how we plan it.
क्योंकि अब मैं बात करूँगी विजयादशमी हम्म, की, जो कि इस बार वीकडेज़ में पड़ रहा है, उसकी क्या-क्या हम्म, आपकी तैयारियाँ होती हैं? किस तरीके से करते हैं? क्योंकि वीकेंड होता है तो मैं देखती हूँ काफ़ी भीड़ होती है, पर इस बार वीकडेज़ में हम्म। है वो, और उसको मैं देखती हूँ दोपहर में ज़्यादा उसको किया जाता है। तो इस बार आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आपका जो हैरो में है वो सेलिब्रेट करने का प्लान है विजयादशमी को? या सो संडे को है, दैट इज टुमारो। तो हुँ, पहले हुँ। तो because the main attraction is the Shiddur Khala that we call it, right? Like you play with Yes. vermilion, like you put on it, and it's a very grand affair. So we try to, हुँ, हुँ। and also you wear red on that day, so you plan for that. एक तो पूजा के बाद you offer, sweets to goddess. So ऐसे मुंह में थोड़ा सा, like if you see the, I don't know whether you've seen it in this Bollywood movies or not, but that's a ritual that you're saying, मतलब ऐसे होता है ना, farewell type का होता है, like you thank God that we had a good year, and then you look forward to. So it's a lot of emotion associated, on the last day of puja, and then we. So in Bengali we call kola kuli. So the men, they actually hug each other. So it's a lot of, and also like I said, it's a lot of emotion things and emotions attached to this whole event. And then also you become, some people, they like, it's a bit like Holi, where you can actually, be a bit little playful. But yeah, it's a nice thing. I feel like, it's a nice occasion to celebrate. And also the end of pujo, then you have something to look forward to next year. But again, you're sad because it's a long wait of 12 months. So that way, yeah, it's a one of the main events, that Chidur Kala event of Durga Puja on the last day, Dashami. एक चीज़ और मैंने नोटिस की है बंगाली दुर्गा Mm-hmm. पूजा में कि वहाँ Mm-hmm. पर एक पानी का रखा जाता है कुछ मटका या कुछ वैसे, जिसमें कि आप जब विसर्जित करने से पहले वो उसमें देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आप Mm-hmm. सचमुच देवी को जाते हुए, या आप खुद शायद उस मोड में होते हैं और ऐसा लगता है कि Mm-hmm. अब हमें विदाई देनी है देवी को, और बहुत ही इमोशनल होता है। क्या आप यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, वो इमोशन जो है ना, दैट इज, इवन दो वी आर सो फार अवे फ्रॉम आवर, like from India, we feel that emotion thing is still there. Like a part of India is all, like is still there in us, and you feel that emotion, even though you're not a, like a hum log, like me, I am not that superstitious about the whole thing. I have faith in, I believe in traditions, but the thing is that feeling is always there. You feel that, oh, you know what, this is not good, and you feel that जो जैसे होता है ना, कोई घर पे आके आपके साथ रहते हो, and then that person leaves, you feel that kind of sadness. So that is there in our hearts, I feel, and for every Bengali is the same, who are like, who come to pujo and you celebrate all 4 days. So yeah, वहाँ पर तो वो जहाँ लगता जहाँ है आप हैरो फीलिंग। में, जी, जहाँ हैरो में आप दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करती हैं, तो वहाँ पर कैसा माहौल देखने को मिलता है ईच एंड एवरी डे? जैसे 5 दिन आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है उसे? जैसे सुबह के टाइम वी हैव आरती, वी हैव पुष्पांजलि, वेयर यू ऑफर फ्लावर्स। जैसे वो चैंटिंग होता है, यू ऑफर योर प्रेयर्स, योर द फ्लावर्स वो डालते हैं। फिर आरती होता है, वे और फिर अष्टमी, द मेन डे है, वी हैव 108 कैंडल्स, या फिर दिया जलाते हैं हम लोग the evening. And after arati and all that, we have bhog, which is like I said, the dinner or lunch. And then towards the evening we have cultural events. These cultural events are, like I said, that it's mainly to promote Indian, like Bengali culture and heritage. Yeah, so people come to attend those events towards the evening. So the evening time we try to finish puja, and then the rest of the evening people can have a little bit of entertainment. So that is how each day is planned. And this time we have only 3 days. So it was yesterday, Friday, today's Saturday, and then everything, like we have Dashami tomorrow. So we plan accordingly so that we have both cultural bits. So people are not, who are coming to see the pujo, they also get a bit of entertainment and cultural events, and they can sit and attend. So, and also we have a few things for the kids. We have sit and draw, different events, like those who can play music, वो लोग music play करते हैं, singing, dancing, सब कुछ रहता है. So we try to do as much, but pujo is always a priority. Once we finish pujo, we start the cultural events. And this evening we have a fashion show. So which is like, it became quite popular. It was quite a good one last year. So we're trying to do the same thing this year. Let's see. Yeah, we are quite excited about it. We have participants who are doing the makeup at the moment. So हम लोग makeup artist है, वो makeup कर रहे हैं, so that they are ready by evening. So yeah, lot of responsibility as well, to get things done and on time. So yeah. जी, अब आप मुझे थोड़ा दुर्गा जी की महत्ता के बारे में बताएँ, हम क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं? क्या ख़ासियत होती है दुर्गा पूजा की? So it's basically, Durga means empowerment, right?
So for me, it's like, and also if you see the story, if you know the story, like, Durga ji has got like 10 hands, and all the weapons are given to her to fight the battle with the evil. So, it's a like, वो थोड़ा sentiment भी रहता है, like it's all about women empowerment. I feel like, even though it's like mythological and all sorts, but I feel it's about empowering women to do a lot. We as like, like I do a lot of things at home, but you don't appreciate yourself. We tend to feel that, okay, it's our job, we are doing it, what's the big deal? But we are capable of doing so much. So Durga ji ka jo, it's kind of, I feel that it's also an inspiration that, okay, so if you see the story, you get a lot of inspiration that, people are losing faith on other big powers, and then a woman comes to the rescue. So, there's a lot to learn from these stories as well, that you have the power. You just have to know that you have it in you, and you have to use the right kind of whatever resources you have got. So that वो मुझे वही लगता है कि I'm not like a very, like I said, I'm not a very religious person, but I can, this empowering woman empowerment thing is, it's very close to my heart. I feel that we have the power, we can do whatever we want, we just need to know where to start. So वही लगता है कि this is what I associate with Durga Puja really. यहाँ पर जैसे हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ के लोगों में उसके लिए क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? यहाँ यहाँ के पर लोगों में जब हम it's सेलिब्रेट no करते हैं। but देखो, like जी, the जी। thing is, we can't expect all that we do because in India it's very elaborate, right? And you get everything that you need for the puja, because every puja has got a list of, so we tend to get a list of items for each of the rituals. Like for instance, Ashtami Pujo, Navami Pujo, you have a list of, like I said, the 108 lotus. Some people offer it. If you get it, it's good enough. If you don't get it, you have to just, somehow know that you don't have it. So you have to use whatever is available. So वो थोड़ा छोटा scale में हो जाता है. Like in India, you do it, you follow each and every ritual. Here उतना ज़्यादा होता नहीं है cause of constraints, and also we don't have the right. Sometimes it's also because of manpower. We don't have enough people who can support us. It's a small community. Though in Harrow, यहाँ पे बहुत सारे Indians हैं, that it's not that difficult, but उतना बड़ा scale में नहीं होता because of time constraint. People have to go. We don't have holidays. That's one thing. तो जितना हो सकता है, we try to do it as much as we can. Recreate the same thing here in London. जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Yeah, sure. Get up and go. Some drivers are part of something special. They're road trip ready because they're covered by the UK's #1 breakdown service. With unlimited call-outs and more expert patrols across the country to get them back on the road before they know it. They are members of the AA. Be with the best this autumn from £7 a month at theaa.com. The AA. Join today. Perfect prescription glasses from just £6 a pair, including lenses and coatings, at selectspecs.com. Discover the surprising details of your ancestors' lives with our ever-growing collection of historical records. Start your free trial today at Ancestry. With ClearScore's brand new ClearSaver, you could instantly see exclusive credit card and loan offers that help save you money. It's quick and easy. Simply share some details from your current account and you can instantly save. And you can even be pre-approved for offers, so you can be ClearScore sure before you apply. Just like I'm ClearScore sure. You don't need all of this. You just need ClearSaver. Just ClearSaver. Download the free ClearScore app and see if you could save. Bursting with goodness and tailor-made to your dog to help you live long, happy lives together. Visit purepetfood.com for 30% off your first box. This is an urgent appeal from Save the Children. Health systems around the world are at breaking point. But we must make sure children get the treatment they need for other deadly diseases. That boy has pneumonia, that boy has pneumonia, this girl has pneumonia, that boy has pneumonia. And there's a new arrival. This is Emmanuel and his twin brother. They've just turned 1. But pneumonia has filled their lungs with fluid, and they are fighting for every breath.
The condition might deteriorate and we're at risk of losing them. Pneumonia is a ruthless and painful killer, but there is a simple solution. Emmanuel needs antibiotics. These tablets cost less than £3, and that's all we're asking you for. Text tablet 10 to 70002 to give £3 a month through your mobile. Your donation will make an even bigger difference for children at such a scary time. They can still have a healthy and happy childhood if they get the medicine they need. This antibiotic could save a child's life. For children like Emmanuel and his brother, a single text could buy the medicine they need. Please, text tablet 10 to 70002. Your £3 a month could change the future for a child like Emmanuel. Mend and sew the easy way with Magic Stitch from JML, the portable sewing machine that fits in the palm of your hand, with the precision to mend delicate fabrics and the power to repair tough denims. It's so fast and easy to repair clothing, fix delicate straps, or sew custom crafts. You can even hem curtains right on the rail. It's battery powered and lightweight. Make quick fixes easy and instant with Magic Stitch from JML. Only $19.99 from Asda, Argos, Boots and Wilko. My parents always said I was born dancing. I just love it. Bhangra, disco, even line dancing. So I was thinking, I want my funeral to feel like a celebration with music, dancing, the lot. With over 150 years' experience, you can count on Co-op Funeral Care to help you pre-plan the send-off you want. Co-op, it's what we do. Who are we if we allow our oldest friends to suffer and die? If we let our forests be cut down and destroyed? Who are we? It's time to decide. We could be the generation that lost it all, or we can be the ones that chose to fight. Please call the number on screen or search WWF Join Us to become a WWF member and join the fight to save our world. No drama, no exaggeration, just the truth. A complete news bulletin. MATV brings you Darshan News at 7 a.m., 11:30 a.m., 8 p.m. and 11 p.m. News the way it should be. क्या बोलते हैं तारे। मैं ज्योतिषाचार्य संजय आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ क्या बोलते हैं तारे। क्या आपको लगता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ गए? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी शादी होते होते रुक गई? हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है। कभी कोई ग्रह, कोई नक्षत्र या कोई खराब योग आपको परेशान करता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। जगवंदन अंजनी सुत बलधारी, केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन, जय हनुमान, जय हनुमान संकट मोचन, जय हनुमान। नमस्कार, वापस से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अभी मैं बात कर रही थी, अब हमारे साथ नई गेस्ट जुड़ी हैं प्रिया। अब हम उनसे जानना चाहेंगे वो किस तरीके से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रही हैं। प्रिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? रादर देन सेलिब्रेशन, मैं इस मौके पे चाहूंगी कि हम इस त्योहार के पीछे जो अर्थ है, जो इसका बहुत ही शक्तिशाली तात्पर्य और मतलब है, हम उसे समझें। और समझने के बाद ये फेस्टिवल का फिर एक और ही
मतलब और मीनिंग बन जाता है। सो द स्टोरी गोज, जो पॉपुलर कहानी है, उस कहानी में एक राक्षसा है, महिषासुरा, और माता दुर्गा आती हैं अपने मैके हाउस from the Himalayas or the Parvat, and on her way to her mother's house she kills this Rakshasa Mahishasura. अब महिषासुरा के पीछे कहानी ये कहती है कि वो इतना ही शक्तिशाली राक्षस था और उसके पास एक वरदान था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता, मनुष्य छोड़ो देवता भी नहीं मार सकता, सिर्फ शक्ति या एक देवी उससे मार सकती थी। तो क्या किया, शिवा आए, विष्णु आए। शिवा कौन है? शिवा है महादेव, द वन हु हैज conquered the excesses of human nature. Shiva is the destroyer and Vishnu the preserver of life. इन दोनों ने अपना शरीर का एक हिस्सा, बाहर का हिस्सा निकाल के एक साथ उसे जोड़ के इतना मतलब शक्तिशाली पावर के साथ दुर्गा फिर उत्पन्न हुई। दुर्गा इसी से उत्पन्न होती है, हाफ ऑफ शिवा हाफ ऑफ विष्णु, और तब वो एक विनिंग फॉर्मूला बन जाती है जो इवन एक महिषासुरा जैसे शक्तिशाली राक्षस जिसे इतने वरदान थे और ये भी वरदान था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता, ये देवी शक्ति जो एक्चुअली अध्य विष्णु और अध्य शिवा थी, वो उसे मार पाई। अब तीसरी दौर पर इस कहानी थोड़ा यहाँ रुक, इस कहानी पीछे जाते हैं की का अर्थ और तात्पर्य। तो महिषासुरा इन अ मेटाफोरिकल मीनिंगफुल स्टैंड्स फॉर द ईगो, जिसके संस्कृत में अहम, और माता दुर्गा एवरी टू ईगो अहम, जो एक बर्ड्स आई व्यू ले कुछ चीजों एक एलिवेट स्टैंड ले सकती है। सबके लिए कार्य है कि हम अपने हम को हम और जब हम उस अहम से उठ अहम से तब जी प्रिया, मैं एक आपको रोकना चाहूंगी। जी मैं इशिता से विनती करना चाहती हूँ। इशिता, आप अपना प्लीज म्यूट पे रखें, अपना फोन कृपया म्यूट कर लें। हाँ, एक मिनट। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Yes, I just wanted to put the context of how महिषासुरा हम सबके अंदर किसी न किसी हद तक हमारे अहम के थ्रू जीवित हैं, और शिवा और विष्णु दुर्गा के फॉर्म में, दुर्गा के माध्यम से हमें ये सिखाते हैं, त्योहार के माध्यम हम अपने अहम पे आत्मा की तरफ जर्नी करके इस पर हम विजयी कैसे पा सकते हैं। ये त्योहार का यही बहुत उच्च और उत्तम अर्थ है, और अगर हम इस त्योहार को रंग के साथ और एक साथ एकत्रित होकर और के साथ ये जो इसका तात्पर्य है, ये तात्पर्य भी समझे, इसकी जो जो मीनिंग है, ये एक और ही लेवल पे चला जाएगा सबके, एंड वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स एज बीइंग थ्रू द सेलिब्रेशन। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आप कोलकाता में हैं, तो आप वहाँ पर किस तरीके का माहौल देख रही हैं इस साल? कोरोना के बाद ये सेलिब्रेशन आपको किस मायने में अलग लग रहा है इस बार? मैं यहाँ पर एक इमरजेंसी की वजह से आई हूँ, पर्सनल फैमिली इमरजेंसी। मेरा प्लान तो नहीं था यहाँ रहने का, आने का इस वक्त, पर आई थिंक आई एम सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल इन द ट्रूएस्ट सेंस, क्योंकि मैं उस ग्रेस
शिवा विष्णु के ग्रेस को अपने में जितने हो सके एकत्रित और जागृत कर रही हूँ, ताकि इस दौरान मेरे इस जीवन के इस दौरान पे मुझे माँ दुर्गा की शक्ति मिले। और जैसे माँ दुर्गा के 9 हाथ हैं, इस वक्त मैं जिस तरह बहुत ही सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि लिटरली माता दुर्गा के अलग हाथ मेरे में भी उत्पन्न हुए हैं। और माता दुर्गा सिर्फ इस त्योहार के लिए नहीं, पर माता दुर्गा इसलिए है कि जब भी जीवन में हमारे आसपास या हमारे अंदर एक महिषासुरा जैसे अहम या कोई सर्कमस्टांस उत्पन्न हो, तो उसे टैकल करने में हम दुर्गा शक्ति अपने अंदर जो है हम उससे जागृत करें। पर यस, आसपास मैं देख रही हूँ कि ऐसे लगता है कि ये प्री कोविड टाइम्स हैं और बहुत सारे पंडाल्स हैं, शहर में ट्रैफिक बहुत है, लाइट्स बहुत है, पर अभी तक पंडाल्स मैंने कुछ देखे नहीं है, बिकॉज एज आई सेड आई एम हियर फॉर अ फैमिली इमरजेंसी व्हिच आई एम डीलिंग विथ नाउ, व्हिच इज रियली द रियल मैसेज ऑफ दुर्गा पूजा दैट आई एम एनैक्टिंग एंड लिविंग राइट नाउ। जी, एंड आई वुड आपकी लाइक टू कन्वे आपने आप सबके जिंदगी में जब भी कोई चैलेंज हो, वो वक्त है कि आप ये फेस्टिवल का जो मीनिंग और तात्पर्य है उसे पूरी तरह आप रियलाइज कर सकते हैं और आप समझ सकते जी, बिल्कुल आपकी जो मम्मी है उनकी जल्दी तबीयत ठीक हो, हम ये कामना करेंगे। और आपको अपने बचपन की कुछ यादें हैं? आप किस तरीके से अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट करती थी दुर्गा पूजा जब भी होती थी वहाँ कोलकाता में, या जहाँ पर भी आप सेलिब्रेट करती थी, वो किस तरीके से करती थी? हैं। ज्यादातर दुर्गा पूजा में छुट्टियां होती थी और हमेशा हम फॉरेन हॉलिडे पे जाते थे जब मैं बड़ी हो रही थी। पर जब मैं मेरे बचपन में बालपन में, पर आई डू रिमेम्बर कुछ ऐसे साल थे जब मैं यहाँ थी। और द मेन थिंग अबाउट दुर्गा पूजा इज इस शहर का और इस स्टेट का, इस राज्य का जितना आर्ट कल्चर व्हिच इज वेरी कल्चरली एंड आर्टिस्टिकली एंड क्रिएटिवली रिच, वो सब डिस्प्ले पे आता है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, यूनेस्को ने भी इसे अभी माना है कि दिस इज जी। heritage event, and that is really, apart from the religious and the spiritual significance, it is also a coming together of the best of art, craft, culture of Bengal, that Bengal has to offer. जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप यहाँ होती हैं यूके में और जब कोलकाता में पहले थी, तो आप क्या-क्या कमी महसूस करती हैं यहाँ पर? कुछ ऐसा लगता है कि जो कोलकाता में कुछ यहाँ पर मिसिंग आपको लगता है, जब आप यूके में सेलिब्रेट करती हैं दुर्गा पूजा तब? Of course, जिस तरह ये कोलकाता पूरा शहर बंद हो जाता है एंड इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, एंड इट्स ओनली द फेस्टिवल एंड मैरी मेकिंग दैट टेक्स सेंटर स्टेज। यूके में तो वैसा नहीं है, पर फिर भी अभी यूके में सारी एशियन फेस्टिवल सेलिब्रेट की हैं एंड ऑन ग्रैंडर स्केल एवरी ईयर। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वक्त के साथ जब यहाँ से यूके में क्रिसमस और न्यू ईयर ये सब बंद हो जाता है, यहाँ पे बंद हो जी। और तो फिर आपको कौन-सा ज़्यादा पसंद है? बचपन वाले जो दुर्गा पूजा आप सेलिब्रेट करते थे वो, या जो अब आप सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ, कौन-सा ज़्यादा पसंद है आपको? दोनों का अपना ही है, और वो भी सुहाने थे और मेमोरीज बन गई हैं। और अभी आई एम ऑल्सो हैप्पी विथ हाउ वी कम टुगेदर एंड मार्क इट एंड सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो मेरे लिए कंपैरिजन की बात नहीं है, दोनों में ही अपनी महक है। जी, अब और पहले के दुर्गा पूजा में क्या अंतर आपको समझ आ रहा है? क्योंकि पहले जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, अब उसमें आपको लगता है कि बाज़ारवाद ज़्यादा हावी है, या कोई परिवर्तन आपको नहीं नज़र आता? किस तरीके से आप उसे देखती हैं? यहाँ कलकत्ते में, आप कलकत्ते की बात कर रही हैं या यूके की? कहीं पर भी अगर अब यूके में देखा तो जाए, ऑफ जब हम सॉरी, जी, जी, यूके में जैसे ऑफ हम कोर्स फेस्टिवल पहले सेलिब्रेट करते थे और अब जो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कहीं न कहीं लगता है जैसे कि बाज़ारवाद हावी है, हम ज़्यादा चीज़ें
खरीदते हैं, ज़्यादा उसको हम प्रमोट कर पाते हैं, ज़्यादा हम देखते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, पहले ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा आप उसको एन्जॉय कर पाते हैं? तो यूके में तो ऑफ कोर्स इट्स बिकमिंग बिगर एंड ग्रैंडर और पूजाएं आ रही हैं, बट हियर इन कोलकाता आई फील इट्स प्रीटी मच द सेम. It's been kept the same whole time. जी, जी। ये आपका वीडियो पॉज़ हो जा रहा है बार-बार। आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है पर वीडियो Now, जी, 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 जी। बताएँ। तो एज़ आई सेड कि आई फील यूके में ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है हर साल में, हम ज़्यादा दुर्गा पूजाएँ देख रहे हैं और लोग मना रहे हैं। कलकत्ते में आई सी प्रीटी मच इट्स द सेम ऑल दीज़ इयर्स. जी, जी। अब मैं वापस इशिता के पास पहुँचती हूँ। इशिता काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रही थी। इशिता, अब आप मुझे बताएँ कि यहाँ जी, जी। Yeah, जी, I प्रिया आप managed to कुछ कहना unmute. चाह रही थी? जी, प्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में। इशिता आप हमारे साथ उपस्थित हैं। जी, इशिता आप बताएँ, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो है ये ज़्यादा बाज़ारवाद हावी है या पहले जो हम सेलिब्रेट करते थे वो ज़्यादा अच्छा था? It's different actually. पहले तो like you cannot compare apples with oranges. That is what I would say. मतलब कोलकाता में the feeling overall thing is totally different than how we do it here. यहाँ पे बहुत कुछ planning रहता है. Like you know, like when it comes to like different है पूरा like I said we cannot compare. पर जो जैसे जैसे मैंने कहा ना like it's a small scale thing of what we get in India. मतलब छोटे we have time constraint, we have less manpower. उतना नहीं है जैसे हम लोग वहाँ पे देखते हैं, you know, it's a grand affair कोलकाता में that you hardly get. Even if you try, it's not possible. That's what I feel. जी। और यहाँ पर जिस तरीके से डेकोरेशन किया जाता है, दुर्गा जी को सजाया जाता है और इंडिया में काफ़ी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनती थीं, काफ़ी बड़े-बड़े पंडाल बनते थे। वहाँ पर जो माहौल होता था वो बहुत ही मिसिंग सा लगता है यहाँ पर। आप इस चीज़ से सहमत हैं? हाँ। वो तो एकदम लाइक या टोटली आई मीन वो पॉसिबल भी नहीं है जैसे यहाँ पे क्रिसमस में बहुत डेकोरेशंस है यू नो इट्स अ डिफरेंट लाइक वहाँ पे वी आर इन द ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड तो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि एक और वहाँ पे आई फील एक्चुअली सॉरी फॉर ऑल द आर्टिसंस यू नो वो दे स्पेंड देयर एंड इट्स आल्सो देयर काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कि आर्टिसंस दे कम फ्रॉम द विलेज दे मेक ऑल ऑफ दैट फिर वो जब इमर्शन के टाइम यू नो विसर्जन हो जाता है देन यू हैव टू जस्ट forget that you're putting all that effort और वो मुझे खराब लगता है. So in a it's and also it's a lot to do with the money you've spent on it. एक पंडाल बनाने में उतना I feel that better you use that money and you know give it to the poor. है ना इंडिया ते like India में you have a lot of people who are under the poverty line. So we could so it's you know like for us for people who are attending those pandals it's a like worth seeing like you know the way they make it very grand. Use a lot of skill like skilled लोग जो village से आती है they live for this you know they get their whole like year का जो income है they get it during the Durga Puja because they work that hard. So you feel sorry but again you feel that ये अगर नहीं होता तो there is nothing for them you know to look forward to तो वो रहता है but you miss that because वो अलग ही affair like people who have seen it like you know Priya just mentioned it's one of the UNESCO maybe declared हुआ है like it's one of the big things like you never see this kind of thing in any part of the world I believe where people put in effort like a year's effort to you know just celebrate this Durga Puja and just 10-day affair or 5 days affair in Kolkata. So yeah वो तो miss करते हैं पर in I think it's a good thing to not have that and then if you build something just for 10 days and then to take everything off. So वो तो है for sure. I missed you. Or can you hear me all right? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। Yeah, the screen has frozen, so I'm not sure whether and there was a call.
जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। इशिता बता Okay. हाँ. Can you hear me? Because your voice is breaking, तो मुझे पता नहीं चल रहा है. और एक कॉल भी आपने कॉल, I don't know. Can you see me all right? इशिता, आप मुझे बता सकती हैं? What is your question? Sorry, like I said, the screen freeze हो गया था, so I wasn't sure I was still जी, जी, जी। connected. जैसे वहाँ पर आप पंडाल देखती थी और यहाँ के पंडाल में आपको क्या अंतर नज़र आता है? पहली बात तो यहाँ पे पंडाल होते नहीं है. इट्स मोस्टली लाइक एन ऑडिटोरियम, इंडोर स्पेस होता है. एक जगह है, देयर इज वन वेयर दे ट्राई टू डू इट, लाइक दे सेट अप अ गज़ीबो काइंड ऑफ थिंग. पर वो जो कोलकाता का जो है, लाइक यू नो, लाइक प्रॉपर आर्ट वर्क एंड ऑल ऑफ दैट क्राफ्ट्स, यू कैन सी कितना एफर्ट लगता है. यू नो, पीपल आर सो स्किल्ड when it comes to making those pandals. That is totally, you don't see it here at all. Though हम लोग छोटा मोटा, you know, we do like a bit of decoration here and there, but it's not the same. जी. यहाँ के Madhu, there is no audio. Can't hear you. इशिता, आप मुझे सुन पा रही हैं? Yeah, now I can. Yes. जी, जी, जी। तो मैं पूछ रही थी आपसे, यहाँ पर जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा, क्या यहाँ के स्थानीय लोग उसमें शिरकत करते हैं, उसमें आते हैं देखने? हाँ, definitely. मतलब it is not only like these days. It's not only the Bengali community who show interest. हम लोग people from like different communities, they come and they want to see how it's done. तो वो अच्छा लगता है. Like, you know, you feel that okay, this is actually bringing people together. You know, if you have your friends who are not really Bengali but they want to know how you do your pujo and what are the different rituals and all sorts. So yeah, आते हैं, and I think they make plans accordingly because we try to advertise early so that people are aware of all that is happening during these 4 or 5 days. जी, मैं आपको सुन पा रही थी। मैं आपसे पूछ रही थी कि यहाँ के लोग क्या उस चीज़ में शिरकत करते हैं? यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखा जाता है? People are always like, they, you know, like the thing is, in this country you barely get to put on your Indian attire, and मतलब हम लोग जैसे, you know, after this puja will be back to our normal like routine or life जहाँ पे ये सब पहनने को भी नहीं मिलता. So people are excited about dressing up, you know, wearing Indian attire, attending all the rituals और पूजा, मतलब जो आरती होता है वो देखने के लिए भी लोग आते हैं. And this is not limited to the Indian population, like the Bengali population that we have. So सारे जो Indians are, and also you have Navratri as well. So people try to do both. So even I know friends who are Bengali, but they try to do this Navratri Garba. You know, they attend that, and then once they're finished that, they come to see the Durga Puja. So yeah, it's like people make a lot of plans as well because these are the only days you get. It's 360 days in a year where you actually can feel that Indianness in yourself. मतलब dress up करते तो लगता है हाँ यार, we are Indians, right? So we like dressing up, like we like our Indian attire, like wearing sari. So that is the time you actually plan, and then after that it becomes like, yeah, you don't get a chance to flaunt your Indian things, so you know, Indian outfits. So this is also, I feel, something to look forward to for many. Apart from the cultural activities, the मतलब friends लोग के साथ, you know, attending all these events and all sorts. And also people like to participate, like as मैंने आपको पहले भी कहा कि we have this fashion show, so people show interest, they want to participate. तो एक chance भी मिलता है, you know, to show your skill and your talent. So ये सब, these are a few things to look forward to Durga Puja के time.
I can't hear you, Madhu. तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ अंत में कि इस साल के दुर्गा पूजा में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? यही है कि बिकॉज मतलब स्मॉल स्केल में तो करते ही हैं, बट दिस ईयर वी आर एंडिंग इट, मतलब जैसे दिन में जिस दिन हम लोग का लाइक टुमारो वी आर ट्राइंग टू फिनिश एवरीथिंग, और अंतर ये है कि बिकॉज 2 years वी हैव बीन लॉकडाउन, वी कैन सी मोर पीपल यू हैव शोन इंटरेस्ट, और लोग पूछ रहे हैं कि यार लाइक व्हाट ऑल आर यू प्लानिंग टू डू, क्या है, एंड ऑल्सो फॉर मी इफ आई कंपेयर व्हाट I didn't do last year. This time I'm trying to go to many more places जहाँ पे celebration हो रहा है. I'm trying to meet up with my friends जिन लोगों से ऐसे we get busy, so इतना time नहीं मिलता है. So this is an opportunity to find some time for your friends as well, like Indian friends. So that is like last year I was only like here Harrow में हम लोग I was busy with other things, but this time I've made sure that I meet up with friends. I go to the other venue, see how it's done, how they're doing it there. तो ये डिफरेंस है मोस्ट प्रोबब्ली. लाइक पीपल विल ट्राई टू कवर एज मेनी प्लेसेस एज दे कैन. जो बंगाल में हम लोग पंडाल हॉपिंग बोलते हैं. जी इशिता, आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और प्रिया का भी बहुत-बहुत शुक्रिया. आप दर्शकों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए. इस कार्यक्रम का समापन. जी थैंक यू. When you can buy by spoke from a real person. Why buy boring? Shop Etsy. Want more speed for less? Try BT's Superfast Fibre 1. It's faster than our standard fibre and now on sale at only $27.99 a month with no upfront costs. Plus, for total peace of mind, our brilliant broadband comes with a £20 money-back speed guarantee. That's why at just $27.99 a month, it's worth every penny. So grab it while you can, because this offer ends 13th of October. Join BT today. Ooh, nice. McCafe, just great tasting coffee. Simple. See up close and clear with Mighty Sight from JML, the magnifying eyewear with instant 160% magnification to make detailed tasks easy to see. The built-in LED lights give you ultra-bright hands-free illumination. See prescription labels clearly, complete fix-up jobs with ease, and enjoy hobbies in detail. Even threading a needle is quick and easy.